Good evening, everyone. Welcome to PG Ka Pathshala. This weekend, I will not publish any weekly or daily chart analysis, which I do after every Friday, either in Saturday or Friday evening. This weekend, we will see something else. Okay, and this is something very interesting, and this actually relates to one of my previous videos, which has become very popular. So I usually you will find that in all of my video descriptions, I give the links of my tutorial videos. Okay, and one of those tutorial videos was Trend is Friend, Intelligent Investor. That was the title. And that video has become very popular. And so today what we will see is a sort of live illustration of that video in the short term. So that video which I did for around 1 hour 25 minutes, so that was a video where I showed the chart of Nifty and few other blue chip stocks like Reliance, ITC, Hindustan Lever, and how they have consolidated over a large period of time, like 6 years, 7 years, and then they broke out, and it really tested the patience of the investors. And many people booked out loss, or booked out in break even, and because they were getting impatient that ये stock तो बढ़ ही नहीं रहा है, and it was giving less returns than fixed deposit also over a period of 5, 6, 7 years. Right, and then once few people became impatient and they started booking losses or booking break even, then all of a sudden it broke out of its range, and then it sort of gave a multi-year and sometimes a decade breakout as well, and it went 4 times, 5 times. Right, we saw the chart of Reliance, we saw the chart of ITC, Hindustan Lever. Now today we will see a very short-term illustration of what the trend is friend means and how sector rotation happens in the market. Okay, so there are sometimes when a few sectors will perform well compared to the market, and there are sometimes when a few sectors will perform badly. Now many people who are getting stuck in those sectors, they may feel that okay, we should move to the outperforming sectors, and they switch their investments. And when they move to the outperforming sectors, erstwhile outperforming sectors, they start underperforming, and the erstwhile underperformers start outperforming. Okay, so that is why it is very important to maintain a nice balance in their portfolio, not to panic, or not to switch too much, because the bull markets usually, because we are in a long term bull market from the 1990s, right? India में तो ऐसा इसका कोई डाउट नहीं है, हमेशा हायर लो बनाते बनाते जा रहा है. इंडियन मार्केट 2008 में क्रैश हुआ था, 2020 में क्रैश हुआ था, उसके पहले 1992 में क्रैश हुआ था, 2000 में क्रैश हुआ था. एवरी टाइम इट क्रैश्ड, इट वेंट टू फॉर्म much higher highs. Right, there has been the track record and history of Indian stock market. तो ये मार्केट में पैनिक करके निकल जाना कोई अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में, इसका कोई मतलब नहीं बनता. तो अभी हम लोग आज देखेंगे, ये एक्सेल आप देख पा रहे हो, आई थिंक यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. Yeah, you are able to see my screen. So in this Excel, I have jotted down few things, like in the column B, you see, I have jotted down the indexes. Okay, Nifty IT, Nifty Bank, Nifty FMCG. So all major indices, so these major indices contain all the Nifty blue chip 50 blue chip stocks. Okay, so now if you see here, निफ्टी आईटी, आप अगर एक चीज देखोगे कि ये जो रोज है, so all the color these rows, so if I just concentrate on this column C D E F, ठीक है, तो कॉलम C D E F में मैं ये जो हाईलाइट में कर रहा हूं ना, इसमें मैं फोकस करता हूं, तो आप देखोगे ये जो बहुत ही कलरफुल दिख रहा है, इसका मीनिंग में नीचे लिखा है. लाइट ग्रीन जो है ये है, सॉरी, दिस डार्क ग्रीन जो है वो है मोस्ट आउट परफॉर्मिंग. थोड़ा हल्का ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये है आउट परफॉर्मिंग मोस्ट पियर्स. जो डीप रेड में है वो है मोस्ट अंडर परफॉर्मर, और जो सैफरन कलर में है वो है, एम्बर कलर में वो है अंडर परफॉर्मिंग मोस्ट पियर्स. ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हो. और लास्ट जो कॉलम नेफ मैंने रखा है वो है मंथली आरएसआई. तो आप एक चीज देख सकते हो कि जो सब स्टॉक्स यहाँ पे मंथली आरएसआई में, जो सब स्टॉक्स डीप ग्रीन में है और बॉटल ग्रीन में है, ठीक है, those stocks have started underperforming in this last 1 month and last 1 week. तो column D last 1 month and column C is last 1 week. तो last 1 week और last 1 month में the sectors which were outperforming, which have outperformed for the last 1 year,
जो पूरा साल का स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएससी, निफ्टी मेटल, ये तीनों सबसे आउट परफॉर्मर है। ठीक है, ये सब आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, राइट? सो दीज हैव गिवन द मैक्सिमम रिटर्न्स, बट दीज हैव स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग इन द लास्ट 1 मंथ। एंड इन द लास्ट 1 मंथ कौन आउट परफॉर्म कर रहा है? निफ्टी आईटी, जो कि सबसे खराब परफॉर्मेंस है उसका लास्ट 1 ईयर में, और उसका मंथली आरएसआई भी देखो 56.34, तो अभी भी 60 आरएसआई से कम है। जो सबसे बियरिश वाला जो इंडेक्स है वो अभी अचानक से परफॉर्म करने लगा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 61.15 विच इज निफ्टी फार्मा, उस वो लास्ट 1 मंथ में 7.24% दिया है रिटर्न। द लास्ट 1 ईयर में इट हैज बीन द सेकंड मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर आफ्टर निफ्टी आईटी। ठीक है, एंड लास्ट 1 मंथ में इट इज द सेकेंड मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर आफ्टर निफ्टी आईटी। तो द सिंपल कंक्लूजन इज, right, so simple conclusion is I am writing in the chat here that the erstwhile outperformers in the last 1 year have started underperforming, and the erstwhile underperformers of last 1 year have outperformed in last 1 month. Outperformers in last 1 year have started underperforming in last 1 month. ठीक है, तो ऐसा सेक्टर रोटेशन होता रहता है। मार्केट जब निफ्टी जब बढ़ रहा है, निफ्टी देखो मंथली और ऐसा ये 67.83, निफ्टी का 1 ईयर 21.25 है। ठीक है, तो निफ्टी 21.25% रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, निफ्टी आईटी दिया है 11%। ठीक है, और निफ्टी फार्मा दिया है 12%। तो ये काफी अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी को 10-11% तक अंडर परफॉर्म किया है। बट लास्ट 1 मंथ में निफ्टी ने दिया है 4.25 और निफ्टी फार्मा ने 7.24 और 7.38। मतलब ये सेक्टर रोटेशन जो मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर लोगों का लॉन्ग टर्म में पेशेंस टेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म में भी जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स है, जो लोग मतलब 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों का भी कभी कभी मार्केट ऐसे पेशेंस टेस्ट करता है कि 1 साल से अंडर परफॉर्म किया, अचानक से 1 महीने में वो आउट परफॉर्म करने लगा। तो ऐसे मार्केट जब बढ़ता है, जैसे निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्टॉक्स, तो निफ्टी जब बढ़ता है तो डिफरेंट सेक्टर्स परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो हम लोगों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर हमारा रहता है तो वी शुड नॉट पैनिक दैट 1-2 स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 1-2 सेक्टर का, क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा मेकअप कर दे रहा है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट आई थॉट of publishing this weekend, this is dedicated to those people who are new to stock market, and those who are opening demat accounts and starting and thinking of starting their investments, okay, through small systematic investment plans or small amounts from their salaries, right? And those who can learn also from this kind of videos that market जब एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हमेशा एक सेक्टर को ही आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट दैट कि निफ्टी एफएमसीजी 81.6 is his monthly RSI, so it is the most bullish among all the indices. तो ये पिछला 1 साल से तो आउट परफॉर्म किया है 30.82%, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले 6 महीने में भी वो आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग, सो मे बी नेक्स्ट 2-3 महीने में निफ्टी एफएमसीजी अंडर परफॉर्म करेगा। ओके, सेम थिंग विद निफ्टी पीएससी ऑल्सो। निफ्टी पीएससी इफ यू थिंक, सी लास्ट 1 ईयर में 35.41, राइट? सो ये 2.67% दिया है, राइट? तो दिस 35.41 लास्ट 1 ईयर में ये सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, लेकिन वो अचानक से अंडर परफॉर्म करने लगा। करेक्ट, निफ्टी फार्मा को भी आप देख लीजिए, लास्ट 1 वीक में 1.28% दिया है, लास्ट 1 मंथ में 7.24। तो ये लास्ट 1 मंथ में अच्छा दिया है, लेकिन उसके पहले क्या था, लास्ट 1 ईयर में इसने काफी पेशेंस टेस्ट किया है इन्वेस्टर लोगों को। जो लोग फार्मा स्टॉक्स खरीदा वो बढ़ ही नहीं रहा था। बाकी आपका एफएमसीजी, पीएससी, रियलिटी, निफ्टी मेटल इतना बढ़ गया। फार्मा में जो लोग इन्वेस्ट किया था वो लोग प्रॉफिट ही नहीं देख पा रहा था। ठीक है, तो वो लोग पैनिक करके बेच दिया बहुत लोग। अभी वो पैनिक करके बेच दिया, उसके बाद लास्ट 1 महीने में वो 7.24 दे दिया।
और जो लोग फार्मा सेक्टर से स्विच कर गया था मेटल में, वो मेटल अभी 3.84% दिया। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में हम लोग नजरिया रखेंगे तो काफी टाइम में ना हम लोग पैनिक करके कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, दैट स्टे टू योर इन्वेस्टमेंट्स, कीप अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड डोंट पैनिक इफ वन और टू सेक्टर्स आर अंडर परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, लाइक 7 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ्स, कभी ना कभी वो आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, कभी कभी आपका 8 सेक्टर चलेगा, 2 सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा, कभी कभी 4 सेक्टर चलेगा, 6 सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। सो कीप अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड कीप इन्वेस्टिंग इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर उल्टा पुल्टा स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपको दूसरा बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, बट फॉर long term investors who invest small amounts in quality stocks, do not get frustrated or disappointed or impatient that आपका stock perform नहीं कर रहा है over 6, 7, 8 months, because if the market is going right and if your companies are performing well, then the stock prices will rise sooner rather than later। ठीक है, और आप लोग पैनिक करके बेच दोगे, उसके बाद ही वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो that's what I wanted to portray through this small Excel sheet. Hope you people like my analysis. Okay, and just like and comment on how you like this, and keep on sharing, and keep on increasing my channel membership subscribers. ठीक है, thank you, thanks a lot, happy weekend।